Okay, are we ready? So, very good evening, ladies and gentlemen. My god, we are growing rapidly, man. So, without wasting any further time, I would like to tell you that today we have another very special guest in the house, that is Sumit Mudgalkar, the most awaited live, I can say. And with a, no doubt, I can also say that this is gonna be one of my favorite live. So without, let's go for it. Take. Hello. हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? All good. How are you? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ऊपर किया। Yeah, me too. ठीक है। यस, बताइए। Just go. Okay. So how are you doing? Like, आई एम वेरी स्कैर्ड। आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस यू गोना आस्क मी, सो oh man, I'm little please, scared about that. please, scared man, please. You have me as a brother, man. Thank you, Good, thank you. good. In the end, if I lose everyone, I have you. Thanks. So you were on set, or you just at your place, like नहीं, your home? I just packed up. I just came home. I just got ready. Okay. I came live. So, like, I've been wondering this, like, how has been your journey from a dancer to a mythological actor? It's quite. I don't know. Like I've talked about it many times, but it's quite different facing the camera as a dancer than Yeah. facing the camera as an actor. You know, your life changes when you become an actor. Your life changes. It's a very different life. The fame life is actually a very different life. So it's like just few years back I was living a very normal, very different kind of life. Now it's quite different. That life had its pros and cons. So does this one. तो एक्चुअली ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि एक्टर में बन के रहूंगा, बिकॉज भी जहां से हम आते हैं वहां पे ऐसा बोल नहीं सकते आप कि यार मैं तो कल जाके सीरियल करूंगा। लोग बोलेंगे पागल है, सीरियल जाएगा। ठीक है ठीक है, जाके पहले मार्केट से सब्जी ले गया, बाद में बात करते हैं। अरे तो वाह. आई जस्ट वेटेड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी एंड आई ट्राई टू गिव माई 100% टू एवरीथिंग आई कुड, एंड लकीली I was able to concentrate 100% on my work, and work has always been something. अगर मैंने 100% दिया तो मुझे in return work ने 200% दिया, so I feel very glad. I've seen your attire of that. Yesterday only I saw it. Not yesterday. I can say in the morning I saw it. But you look fantastic, and the way they have the curly hairs and that, man, you took it. Thank you, You thank you, literally took thank it, man. you. Ajay, I wanted to ask you one thing. I Yes, heard yes. you used to live in Nare Ambigao, Pune. By any chance, is that true? Yeah, it is. It Even is. I'm from Nare. Oh man. मैं भी नरे से ही हूँ, yeah. So I just got to know. Someone said कि आप जिनके साथ लाइव कर रहे हो वो भी नरे से हैं. Like I used really? to मैं live there पूछता back था. in, but then recently I just shifted to Mumbai. So I could have met you there, man. Why didn't you meet me there? देखा होगा कभी तुमने, बस चल के जा रहा है कोई Yeah, I've बंदा seen. I've seen. शॉर्ट्स पहन के. Okay, so moving on, I really want to ask you this. It like the lockdown phase was literally, I don't know. For some people it was worst phase. For some people it was a life changing phase. So what it was for you? uh, it was both, right? Like every situation, I think so has its good and bad. So Yeah. for me, lockdown was good because I had a lot of free time, in which firstly I thought a lot about life. Secondly, I played a lot of games. Okay. So these were the two things. I thought about a lot of things because 2 साल हो गए थे शो को तकरीबन उस टाइम पे, and it's like constantly you're working every single day. 30 दिन आप काम कर रहे हो, तो you don't have much time to process what changes you went through as a human being, as an actor. क्योंकि आप में भी आ जाती हैं बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, आपको रियलाइज नहीं होता है व्हेन यू आर ग्रोइंग। आपको लगता है कि आई एम डूइंग फाइन, आई एम राइट, बट इट्स नॉट the way it is. So I learned a lot of things. I also felt a little isolated sometimes, but that's what happened with everyone. The sadness is that it was not a very good thing, right?
to हमें जब बंद किया जाता कहा जाता कि आप बाहर नहीं निकल सकते यू जी कांट जी वेकेशन अलग चीज होती है बट इज नॉट अ वेकेशन एंड एवरी सिंगल डे जब आप न्यूज देखते हो समथिंग टेरिबल इज हैपनिंग एंड पीपल आर सफरिंग you can never be happy with all that. some people very rarely said that we are really giving a vacation, something like that. But I never felt that it was a vacation though. Because every day something bad was happening and you were just stuck in the house. Even if you see outside, you will just see the dogs. That's it. But somewhere I feel it was important. Somewhere. Yeah, see everything has its like आज के डेट में मैं खुद को एक चीज समझाता हूँ जो भी चीज होती है अच्छे के लिए ही होती है जब आप ये मानते हो तो जो भी बुरा भी होता है ना आपके साथ जो उस टाइम पे लगता है क्यों इतना बुरा हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है व्हाई इज माय लाइफ लाइक ऐसे ऐसे टूट क्यों रही है क्या हो रहा है सो व्हेन यू बिलीव कि सब अच्छा अच्छे के लिए हो रहा है इन टाइम लाइफ प्रूव्स यू दैट ये चीज इस चीज के लिए हुई थी एंड दिस इज व्हाई me as life I had to do this to you. So that's a way of looking at life which I'm learning right now. Me here too. Me here too. Okay, so I just got this. I just got to know this that you are socially very inactive. Is that true? Socially as on social On media, the Instagram, yeah. नहीं I am. It's like कभी बीच में आता हूँ अच्छे से रहता हूँ कभी बीच में जाता हूँ तो the thing is कि actually काम इतना होता है and there are some other things going on as well. I'm working on some things on my own YouTube channel. कुछ चल रहा है and it's I know gonna take exactly. some time. हाँ कुछ चीजें चल रही हैं तो उस चीज की वजह से ना 100% मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो Okay. उस चीज की वजह से थोड़ा मैं बैकफुट पे जाता हूँ कभी कभी So I just researched about you yesterday, and it has like you have a YouTube channel and you have a YouTube video coming from since way long. soon Uh, okay, for this soon soon I have a it's question from one of your fans. Okay, this is your fan questions on behalf of them. So they want to ask you why your soon never comes. the thing is I'll be very honest मैं चाहता हूँ कि सब लोग सच्चाई को समझें क्या होता है मैं सोचता हूँ कि ये चीज मैं प्लान करके इस हफ्ते के एंड तक कर दूंगा बट व्हाट हैपेंस स्क्रिप्ट आती है इतनी बड़ी स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट याद करते करते सीन्स के डिस्कशंस में पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता देन आई कम बैक जो बचा कुछ 1-1.5 घंटा होता है आई ट्राई टू लिव माई लाइफ शांति से टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट डे मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ देन आई स्लीप आई वेक अप ऐसा चलता रहता है सो कुछ फिक्स नहीं होता है लाइफ में शेड्यूल मेरा फिक्स नहीं होता है सो मैं प्लान आउट नहीं कर पाता चीजें और मैं तब तक बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता क्योंकि मैं चाहता हूँ करूँ तो अच्छे से करूँ जी. इफ आई डू समथिंग आई मस्ट डू इट गुड अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग तो करो तो टाइम लेके करो अच्छे से करो तो होता है सब लोग मुझे ऐसे चिढ़ते रहते हैं कि सून मतलब आएगा 1 साल बाद 1.5 साल बाद ऐसे रहता है Oh, that's really perfect, man. And I will personally really try now to make this tiredness of your day get a bit low. Okay, so I have some picked up questions. Okay, from your fans. This is from your fans. Okay, so you want to know if you get a chance to pick one and kick one, whom will you pick and whom will you kick, and that's why. And the options are Mallika Singh, Shakti Mohan. ah Acha, is there any insurance policy? If I kick someone, what will happen to me next? Am I insured there? Bro, you will just safely walk out just the way I did in my last life. नहीं, it's very hard. I never encountered such questions, okay? कि किसको मैं kick करूं और किसको pick करूं. This was I don't know. my question. Yeah. I'm worried कि तुम्हारे questions क्या होने वाले हैं अगर पहला question ही ऐसा है. This is I'll get. I think so. हाँ, बिकॉज शक्ति दी को भी मैं जब से देखते आ रहा हूँ टीवी पे जब हम डांस क्लासेस पे सीखते थे डांसिंग तब से देखते आ रहा हूँ तो और मलिका इज अ वेरी गुड फ्रेंड सो आई थिंक सो इफ आई किक हर शी विल अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट किक एनीवन एल्स बट माय फ्रेंड सो आई विल किक मलिका एंड होप दैट शी अंडरस्टैंड्स व्हाई आई एम किकिंग हर एंड आई विल पिक शक्ति दी फॉर दिस मैटर Oh, smartly answered, man. I must say. Okay, moving on. Tell us about your search history of Instagram.
Of Instagram. Of Instagram. Yeah, on I your think Instagram. so. I searched for iconic. कल मैंने आइकॉनिक का ये देखा क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि तुम जिसके साथ लाइव जा रहे हो ना वो बहुत खतरनाक चीज है, वो बहुत अजीब अजीब सवाल पूछने वाला है, Oh, oh, देखना जाके क्या लगे। तो फर्स्ट इज दैट, okay. फर्स्ट वो चीज है। बाकी तो मैं यूजुअली सर्च नहीं करता हूँ। मैंने बीच में अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्च किया था। Okay. हाँ, उतना मुझे याद है। एंड आई फॉलो सम कोड्स, कुछ मीम पेजेस, दे हेल्प मी। तो उनको सबको मैं फॉलो करता हूँ। एग्जैक्टली मैंने अभी देखा नहीं है बट समथिंग लाइक दिस। That's really great. Okay, this is another curious questions, and I have not noticed this, but oh man, your fans did. Okay, there is a T-shirt mystery which says the T-shirt you have wore and posted a picture with is being seen on Malika's post. She wearing it after some days. So you guys have the same T-shirt or you have the twinning T-shirt? वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक सेम टी शर्ट्स। कैप्स जो है, मैं मेरे पास कैप्स का भंडार है। सो समटाइम्स मलिका लाइक्स इट, शी टेक्स इट, एंड सो डज एवरीवन एल्स। एंड दैट्स हाउ आई थिंक फ्रेंडशिप इज। Okay. मैं भी जब जो मेरे दोस्त है, मुझे अगर किसी के घर में कुछ अच्छा टी शर्ट लगता है तो मैं Okay. लेके आता हूँ। मैं मुझे कुछ Okay. अच्छा लगता है लेके आता हूँ। सो मलिका इवेंचुअली हैज अ फ्यू टी शर्ट्स जो मेरे पास भी हैं। बट कैप्स हम शेयर करते हैं, काफी हद तक हमारे कैप्स शेयर होते हैं। Oh, that's really wonderful. So I guess many of them have really got the answer. That was someone's question they just mentioned right now. So coming back to my thing, okay. Okay, brother, I have some rapid fire questions for you. Of a really fun game it's gonna be. Please don't worry on anything. I really don't have anything controversial, but yes, it's gonna be a fun game. I promise you that. Okay. So if once you're ready, I'll get the first one to you. Okay. Yeah, What is the thing? What is the one thing of yourself you are obsessed about? I'm obsessed about. I'm not obsessed about myself. The I'm one the thing about person. yourself. Like I am obsessed about my hair. Trust me. I'm not obsessed about my hair. I think so. This one thing, if I say कि मुझे अपने बारे में ये चीज अच्छी लगती है, तो I think so. Eyes, Eyes. eyes. Yeah, yeah. Very well. Okay. Moving on. What was your love at first sight? I think so. Love at first sight is not that will happen to me anymore, because I think so. In a few years, as you grow, आपको realize होता है कि love is not कि किसी को देख के प्यार हो गया। Love is something which is very very deep, which is very strong, and ये या तो आपको शिखर तक पहुंचा सकता है या तो पाताल तक पहुंचा सकता है। तो Well, इट्स it इट्स वेरी could have been, इंपॉर्टेंट। even when I was a child, it could have been many times with me. So even you were the अच्छा, एज same. अ चाइल्ड, Yeah, like एज अ चाइल्ड the first one you ever felt. आई थिंक सो इट वाज ऑन, आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, एंड मैं फेसबुक तब नया नया आया था, तो मैंने देखा था, एंड आई लाइक द गर्ल, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। So your first love site was on Facebook. या, इफ दैट्स व्हाट वी कैन Yeah. कॉल लव। Okay. Moving on. What was the most unromantic moment of your life? Unromantic. My entire life is unromantic, bro. Okay. What would you say if a man hit on you? I'd say no, man. Please don't do this. I'm pretty. I don't know. I get a little awkward Scared or awkward? when something like this happens. Like it's Happens. not like that this has happened and it's like ये होता रहता है. But Uh-huh. some people, it's just My that it's their life, and they must be happy with however life they are living. Nobody should judge them, and everybody should support a person to be the way they want to be. absolutely. But I try to explain in my own way कि ठीक है, Not the अच्छा guy है। you saw. हाँ, आपके प्यार का मैं सम्मान करता हूँ, पर थोड़ा दूर से सम्मान करता Okay. Moving on. One thing according to you, everyone pretends to be in the entertainment industry. हूँ। I think so. Everybody pretends to be nice on your face. Not everybody, मतलब जो लोगों की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं,
and I think so. That's what is something which I don't like at all. Okay. I even thought a lot about this कि ऐसा क्यों होता है, ये तो नहीं होना चाहिए यार. People should be very real in it, and even I tried to be. But the thing is that एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे हम काम करते हैं, आपको बहुत मैं तो पर्सनली किसी को हर्ट करना नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ अगर किसी के साथ मेरा नहीं भी जम रहा है ना, तो मैं उनसे बात करूँ कि लिसन, वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, एंड बी थोड़ा अलग है ना. तुम अपना करो, मैं अपना करूँ ना, मैं आपको परेशान करूँ ना, तुम मुझे परेशान करना, कोई भी हो. But It was that's not how exactly it works. You know, some people might take it otherwise, some people don't like it. So you have to stay happy, smiling, and kind as a human being, any which way. So I be kind to people, and after that, जो भी होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाजू में अपनी जो लाइफ होती है जब हम घर जाते हैं, सो दैट्स योर लाइफ, यू लिव दैट. एंड आपको अगर लगे कि यार मुझे नहीं लगते ये लोग सही, तो किसी को कोसने की या किसी कुछ करने की जरूरत नहीं. अपने लाइफ में थोड़े रिजर्व रहो, इतना मैं करता हूँ. I believe that if you and me, for example, if we take, so हम दोनों का अगर नहीं बन रहा है, so I will try to figure it out why it is happening. Secondly, I'll try to sort it out. And still, if it is not happening, I'll just give you a hug and I'll tell you, brother, we just stay a bit far, like थोड़ा दूर रहो तुम अभी. That's where it works, I guess. या क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता ना कि तुम अगर अच्छे से सामने से गले लगने जाओगे या बात करने जाओगे तो सामने वाले का Exactly, रिएक्शन क्या होगा. नॉट exactly. नेसेसरी कि वो हमारे इंटेंशन को वैसे ही समझे जैसा हम इंटेंड करते हैं. तो वो चीज एक पॉइंट के बाद आपको हर सिचुएशन के हिसाब से पकड़ के चलनी पड़ती है. बट देयर इज वन थिंग फॉर श्योर, nobody has a right to pass on negativity to anyone for their personal likes and interest, and if they don't like you or they don't love you, I tell this to myself, अगर मुझे कोई इंसान सही नहीं लगता है, किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने पीछे से कुछ बात करी, तो जरूरी नहीं कि हम उसको जाके बैश करें, you're doing wrong, you did it wrong. You just have to understand that you can't expect these things from these people, that's all. And it is like the same love you give to people, you should not expect the same thing. Someone told me, you be kind to everyone, you give love to everyone, but doing this and expecting something in return is kind of selfish. So then again, it gets me back to the same thought कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. You be kind, you be nice, you don't talk ill about anyone behind their back, and you try to be your best version. What people do is not something in your hands and not something you should think about. Brilliant, brilliant, man. Okay, so moving on. Okay, Sumit, now rank the following actress in order of preference based on their discipline on set. Discipline on set. Discipline Okay. on set. Okay, Yeah. so in option I have it for you is Ashwini Bhave, Malika Singh, and again Shakti Mohan. I think so. Ashwini ji is on the top rank. Okay. Okay. Then Shakti should be on the second position, and Malika should be on the third because I think so. Experience matters a lot, and Okay. Malika ने अभी शुरू किया है. Shakti दी is like since the beginning of everything. तो उनको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा और एक्सपीरियंस होगा. तो प्रोफेशनलिज्म धीरे धीरे ग्रो होता है एज यू लर्न अंडरस्टैंड. बट यस, अश्विनी जी तो बहुत सीनियर है, तो उनसे तो बहुत चीजें सीखने How मिली was, मुझे. how was how was your experience working with Ashwini ji? It was good. It was very nice. She's very kind. She's very nice, and everybody knows her. Everybody knows her. तो एक बार हम आ रहे थे, पैकअप हुआ हमारा, और पास में कुछ तो ऐसा था, चिक्की का दुकान या ऐसा कुछ जो बंद हो गया था. चीज का कुछ तो फैक्ट्री था वहां पे, पता नहीं ऐसा कुछ था. और वहां पे हम गए और वो बंद था. तो हमने पूछा कि अरे चालू कर सकते हो थोड़ा प्लीज, थोड़ा ये वो. तो बोले नहीं नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता है. नहीं, आप जा ही रहे. बोले प्लीज प्लीज. बोले नहीं नहीं नहीं, आप जा ही रहिए. तो अश्विनी जी आ गए. बोलते कि अरे आप अश्विनी भावे. बोलते हाँ हाँ हाँ. बोलते आपको भी कुछ चीज भी चाहिए. बोलते हाँ, आप क्या आप खोल सकते हो प्लीज, हमारे लिए, हमारा टीम है पूरा. बोलते हाँ आइए ना. बोले सही है. बोले यही तो चाहिए, जीवन में उतना बड़ा बनो कि चीज फैक्ट्री आपके लिए खोली जाए. Oh man, this was really great. Okay, moving on. What is the cheesiest proposal you have ever got? आई थिंक सो. नहीं, मुझे इतनी प्रपोजल्स तो याद नहीं है. Or a यूजुअली cheesiest व्हाट हैपन, has ever used on you? एनीवन यूज्ड ऑन मी.
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना कुछ कोई ऐसे इतना लाइन नहीं मारता है। आई एम ऑलरेडी इन माई ओन जोन। लड़कियों को लगता है कितना एटीट्यूड है इसमें, कितना ईगो है इसमें, बट आई एम बेसिकली लिटिल कॉन्शियस, लिटिल शाय इन माई ओन जोन। समटाइम्स आई ओपन अप, समटाइम्स आई एम लाइक इन माई शेल। तो लोगों को लगता है कि इसमें कितना एटीट्यूड है ये वो, तो कोई ऐसा सोचता ही नहीं होगा कि क्या है, इसको प्रपोज करना है, ये तो भाव खाएगा। तो ऐसा किसने ऐसा किया नहीं। I really feel we are like sort of same, bro. We like to live in our own world. I'm way But happier. I think so. You are a much more charming No, person. man. Okay, I think so. नहीं नहीं No, नहीं man. नहीं 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 No, नहीं। man. मुझे नहीं Please लगता don't, है please don't पक्का judge me. Please तुम्हें तो don't judge रोज me. प्रपोजल आते होंगे। Please don't judge me. Judge me. I'm moving on. Anyways. Okay. So, man. So this is one another. What was the most horrible fan moment of you? I don't think so. It's कोई ऐसा हॉरिबल कोई चीज हुई है, बट कभी कभी होता है ना कि see, everybody has a way of loving, Exactly. has a way of giving you love. You meet as an actor, you meet 100 kinds of people, different kinds of people. But there's some people who try to get a little cozy with you for whatever the reasons they have. Okay. That's something which I don't like. So sometimes when people just come and they like कि ऐसे पीछे से हाथ आता है, अरे कैसे हो भाई, और ऐसे खींच के आपके ऊपर हाथ रख के ऐसे पकड़ के फोटो खींचते हैं। I understand the love, but I prefer कि थोड़ा please let's get there where I myself put my hand on your shoulder. ऐसा मत करो. Comfort zone. So that's Comfort something which I don't like. Yeah. zone. Man, that's really okay. So moving on. So, what are the two things about the entertainment industry you don't like or understand? I don't understand. One thing is, see, there are a lot of people like uh, I hope a lot from a lot of people, and that's my flaw. I shouldn't hope from everyone, and I shouldn't expect from everyone. But what I in the end मैं क्या सोचता हूँ कि मैं यार सबके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। इन रिटर्न ये पीछे से ऐसा क्यों बात करते हैं, ये क्यों करते हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती कि ऐसा क्यों करते हो। uh, और अगर ऐसा है तो प्लीज आके मुझसे बात कीजिए। आई एम वेरी ओपन अबाउट थिंग्स। सो इफ यू डोंट लाइक मी, कम एंड टेल मी। इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग दैट आई डिड, कम एंड कंप्लेन इट टू मी, एंड आई कंसिडर यू एज माई ओन, आई इम्प्रूव इट। बट वो चीज नहीं होती। पीछे जाके समय ने ना ऐसा किया है, समय ने ना वैसा किया है। अरे पूछो तो सही क्या है। बट अभी कोई भी चीज होती है ना कि ऐसे ऐसे समय ने ही किया होगा, उसने ही किया होगा। सो आई गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। एंड यस, मैंने कल एक ये देखा था, एक लाइन मैंने सुनी थी कश्मीर महाजन भाई के मुंह से, जो मेरे को बहुत हंसी आई, उस पर बहुत हंसी आई। उन्होंने उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऑन कैमरा एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, इतनी Yeah, yeah, एक्टिंग yeah. नहीं कर पाते, पर जैसे ही Brilliant कट actor होता of है दे that. आर द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स। तो वो चीज पे मुझे बहुत हंसी आई। There are a lot of kind people on sets. There are a lot of nice people on sets. But we are Yeah. basically talking about these people. The other people who are nice and fine and who with whom you feel very close and very nice are the Mhm. people who motivate you to grow and go forward. Okay. Brilliant. So, moving on, brother, I have this last question for you. An actress who has been your first crush the time you entered the industry. The time I entered the industry, Katrina Kaif. This was expected, I guess. I just saw Ranveer Singh's post yesterday. नहीं एक्चुअली आई डोंट थिंक सो उस टाइम पे ऐसा कोई होगा जिन्हें कैटरीना कैफ कैफ नहीं पसंद होगी। So, तो हमें तो ऐसा था ना कि अरे बाप रे कैटरीना कैफ, तो हम तो ऐसे थे, अभी so भी are you ऐसे looking हैं। are you looking forward to enter any like reality show? Oh, please no buffering, man. What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? हेलो। You got हाँ। ah expected. Okay, so the last question was, have you are you looking forward to enter any reality show or something like that? एज ऑफ नाउ आई एम नॉट। आई थिंक सो इट्स नॉट लाइक कि मैं करना नहीं चाहता या ऐसा कुछ है, बट अभी
लाइफ में मेरी जर्नी मुझे जहाँ ले जा रही है, मैं बस खुले हाथ से उसका स्वागत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने साइड से बेस्ट दे सकूँ जो भी मेरे वे में आए. Perfect. Brother, I really want to congratulate you for getting nominated as a Best Actor and also in the Jodi. Yeah, yeah. You I think deserve so. People have given our Jodi so much of love. So much lot of love. love. Yeah, yeah. It feels good. It feels good. It Uh, feels, it Me feels. and Malika, we never felt कि 3 साल पहले जब हम ऑडिशंस दे रहे थे और यहाँ से वहाँ उधर से यहाँ इधर से यहाँ भाग रहे हैं, इधर ये वर्कशॉप उधर ये इधर लुक टेस्ट हो रहे हैं, 10-12 लुक टेस्ट हो रहे हैं. We never thought कि we'll get all this that's happening. And definitely as a co-actor of hers, I feel really nice. अगर शायद हो सकता है कि मलिका की जगह कोई और होता तो शायद हमें इतना प्यार नहीं मिलता. I think so. Malika being Malika and Sumit being Sumit together is what worked out, and definitely the entire team, the way it all worked out. I think so. Everybody has equal contribution to me, her, or the show getting love. Exactly, exactly. So, all the very, very, very best wishes to you, man. And as I said in the starting of the live only, that this is going to be one of my favorite live, and fortunately, it did. High five to you, man. Really, you didn't find me boring or something? Oh man, not at all. नहीं नहीं, the people some people don't like philosophy and stuff. They want me to answer not being me. तो उनको लगता है कि अरे philosophical diplomatic Brother, आंसर it was नहीं my देंगे. job to entertain you, not your job to entertain. नहीं नहीं, but you are a very good host and Thank you. you're very kind and you're very good looking, charming, handsome. I hope you get everything that you are working for. And everybody was asking me ki, why are you not removing your cap and something? Ah, Uh, I'm not allowed to answer this as of now, but there's something which I can assure you. The reason why I'm wearing this cap and the reason why it's going on for so long is something which you guys are gonna love in future. And I'm trying my best that you guys will love whatever's coming your way in future. I can guess it is something related to your show. I'm not allowed to answer that. Okay. Brother, before I just say anything, I would like to take one screenshot with you, man. A brotherhood Sure, man, quote. sure. Okay, on the count of three, man. 1, 2, 3. Thank you so much, Sumit. It was great time with you, man. I hope to see Thank you you, soon, and Aditya. I best wishes भेटूया with आपण you. आपण नरेमध्ये भेटूया आपण. भाऊ नक्की भेटू, काहीच भाऊ विषय नाही नक्की रे त्याचा. भेटायचं भावा, आपण मस्त बाईकवर फिरायचं. वाईट करू भाऊ, वाईट. See you Yes, brother. then. Nice talking to you. Take care. Whew. So it was really, really great time with you. And sometimes when you have someone whom you know from past, it really took a lot of it. So if you guys have any related questions or anything else, you guys can ping me up on my personal Instagram ID. That's Aditya Khurana. And I'll be going through every mentions, every comments, and every DMs. I'll try my best to. So I'll see you guys there. And if I'm sorry if I didn't got your questions on board, I'm really sorry for that. But yes, I'll see you guys tomorrow with some new live. And till that, please take care and I love you all. Hasta la vista.